ट्विटर पर फेक न्यूज़ और मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों पर पाबंदी लगाने से मुतालिक अर्जदाश पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और ट्विटर को नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी लीडर विनीत गोयनका ने यह अर्जदाश दाखिल करते हुए अपील की थी कि ट्विटर और फेसबुक के पास मुल्क मुखालिफ ट्वीट को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, लिहाजा इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक मैकेनिज्म बनाने से मुतालिक हिदायत दी जाए। Like Twitter and social media companies are profit-making companies. The logic and algorithm that they use should be screened and vetted by Indian government authorities or competent authorities. And if there are any anti-India tweets, then that must be stopped. And since there is no mechanism or a law to check online content on social media platforms such as Twitter and others, and therefore the same platforms are being used by players to amplify and call out for activities that are against the spirit of the Union of India. And the Twitter are being used by the separatists, creating panic in the society. What we saw during the Delhi riots, what we saw on January 26. So therefore we requested Honorable Supreme Court that since there is no mechanism to check the online content and there is a need for a law, the Honorable Supreme Court issued notice to the central government and the Twitter.